अलग अलग नाम रखने से तफरकाबाजी होती है। ये कोई कहेगा तो आप कहेंगे अजीब बेवकूफ आदमी है, अजीब पागल आदमी है। दैट इज व्हाट पीपल विल थिंक, क्योंकि दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिकग्निशन, है ना। ये पहचान के लिए कुरान में जब अल्लाह ने फरमाया कि हमने अलग अलग शुऊब में रखा, अलग अलग कबाइल में रखा ताकि एक दूसरे की पहचान हो, तो इस वजह से हमारी अलग अलग सरनेम्स होते हैं, अलग अलग दीन के नाम है। हम ये कहें कि नहनु अलल फितरा, वी ऑन द रिलीजन ऑफ नेचर। कोई पूछे व्हाट रिलीजन डू यू फॉलो? नेचुरल रिलीजन, फितरा, वी फॉलो द फितरा। क्या जरूरत है इस्लाम नाम रखने की? क्योंकि दावेदार फितरत के बहुत लोग हैं। बुद्धिस्ट भी कहते हैं कि वी फॉलो नेचर, हिंदू भी कहते हैं वी फॉलो नेचर। तो हम लोगों का दीन का नाम इस्लाम हो गया। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला इन हिज टाइम everyone called themselves is Muslim, तो सैयदना अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि हम अहलुस सुन्नती वल जमाअह हैं। तब हमने अपने आप को अहलुस सुन्नती वल जमाअह रखा। इस तरह इमाम अबू हनीफा के ज़माने में, इन द टाइम ऑफ इमाम आज़म अबू हनीफा, there were people who believed that the masa on the khuf was not allowed। जो मौजू पे मसा है वो जायज़ नहीं है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा at that time he said that we are the ahlu masjid khuf, we are the people who do masa on the khuf, we are those। तो ये सब पहचान के लिए है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला gave Ala Hazrat Imam Ahmad Raza radiyallahu ta'ala such a station that Allah raised his name so much when he tried to diminish his name for the sake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah raised his name so much that today the truth and false is recognized by the name of Imam Ahmad Raza, है ना। वो आला हजरत की क्या शान होगी आप सोचें। वो आला हजरत की बात है कि आप मारहरा शरीफ में तशरीफ ले गए। He was in Marehra Sharif once in the month of Dhul Hijjah, and Ala Hazrat radiyallahu ta'ala is with Sayyiduna Sheikhul Mashayikh Imam Abul Hasan Ahmad Noori radiyallahu ta'ala an, and they are both going into the masjid in Marehra Sharif। अब मस्जिद में जा रहे हैं सीढ़ी चढ़ने के लिए। They are about to climb the stairs, and Huzur Sheikhul Mashayikh sees Ala Hazrat radiyallahu ta'ala and says to him कि मुबारक हो, congratulations, बरेली में आपके घर बच्चा पैदा हुआ है। A child has been born, उसका नाम आलुर रहमान है। His name is आलुर रहमान, ये मुफ्ती आज़म हिंद का नाम है। आलुर रहमान है और ये मुहय्यिद्दीन जीलानी है। He is one who will give life to the deen, and he is Jilani because he will be the Hamshabi of Ghaus Pak, Sheikh Abdul Qadir Jilani, yani Sheikh Ahmad Noori radiyallahu ta'ala an. When Mufti Azam Hind was born in Bareilly Sharif, through his kashf, he told Ala Hazrat before he received the news himself that at your home a boy has been born. He is a born wali of Allah, and he will be Alur Rahman, he will be Muhyiddin, he will be Jilani, you will name him Muhammad. Subhanallah. Huzur Ala Hazrat radiyallahu ta'ala performed that Fajr Salah, and after that he received news later that a child has been born, and he gave him the name Alur Rahman Muhyiddin Jilani Muhammad Urf Mustafa Raza। तो आप सोचें कि क्या शान होगी मादर जाद वली हुजूर कुतुब मदीना Sheikh Ziauddin Madani, the Qutub of Medina Munawwara, who at the age of 16, he was 16 years old when Mufti Azam Hind radiyallahu ta'ala was born. Mufti Azam Hind radiyallahu ta'ala was born in 1893. 1893 आपकी पैदाइश हुई। Qutb Medina, Sheikh Ziauddin Madani, who left Hindustan, he left everything and he migrated to Medina Munawwara, and he lived the rest of his life in Medina Munawwara. Do you know how long he lived? 107, 108 years, maybe 109. Qutb Medina, he was well respected in the Harmain Sharifain. His name is renowned all throughout the world. Even the deviant scholars of Haram at that time, the Wahhabi scholars, they used to fear Qutb Medina.
They used to be scared of him because they knew the knowledge that he possessed. That knowledge came from Bareilly Sharif. Bareilly ke faizyab hai. Khutbe Madina radiyallahu ta'ala, he used to say that Mufti Azam Hind Sheikh Mustafa Raza was a born wali. There are those who come into the world, in their childhood they do things, they are marful qalam. They are not sinful for the things they do in their childhood. But Mufti Azam Hind is that personality who was born a wali of Allah, and Allah protected him from all sins from his birth all the way till he lived his life. Huzur Qutb Madina saw he was born, and Huzur Qutb Madina saw when Mufti Azam Hind passed away. He was still alive. पैदाइश के वक्त भी जिंदा थे, वफात के वक्त भी जिंदा थे. Huzur Qutb Madina radiyallahu ta'ala used to say that I have seen many karamat of Mufti Azam Hind. And he says that once when Huzur Mufti Azam Hind was coming for Hajj, Huzur Qutb Madina was at a very old age. Bari kibar sini ke alam mein, kamzori ke alam mein. When he was told that Mufti Azam Hind aa rahe hain, he walked 30 miles, 30 मील उस बुढ़ापे में आप चल के हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के इस्तेक़बाल के लिए from Medina Sharif, Qutb Medina, the Qutb of Medina Munawwara is leaving Medina Sharif to go and do the istiqbal to greet this wali from Bareilly Sharif from Hindustan. 30 miles he walks. Nare Takbir! Nare Risalat! Nare Haydari! आप सोचिए क्या एजाज है मुफ्ती आज़म हिंद. जिंदगी हिंदुस्तान में, मरकज़ इस्लाम मदीना मुनव्वरा, जब वहाँ दीनी खिदमत की तो यहाँ वो एजाज मिला सरकार. सुभान अल्लाह. At the age of 18, 18 साल की उम्र में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला, बचपने की भी बहुत करामतें. There are many incidents. You should study the works of Huzur Mufti Azam Hind. But I am keeping this short because we don't have much time. I know you will get tired. I won't get tired talking about Mufti Azam Hind. He is my Dada Peer. हमारे पीरो मुर्शिद के वो पीरो मुर्शिद हैं. हमारे उस्ताद हुजूर मुहद्दिस कबीर, उनके वो उस्ताद हैं. हमारे दादा पीर भी है, हमारे दादा उस्ताद भी है. हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद at the age of 18 आला हजरत से तालीम हासिल की. आपके बड़े भाई, his elder brother हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, he studied under him, under his father आला हजरत. He received khilafat from Marehra Sharif. अच्छा, when Sayyiduna Imam Abul Hussain Ahmad Noori radiyallahu ta'ala, Sheikhul Mashayikh of Marehra Sharif, gave the news to Ala Hazrat that in Bareilly your son has been born, give this name to him. At that time, Huzur Abul Hassan Sheikhul Mashayikh said that I have entered him into the silsila of Barkatiya Aliya Qadriya. मैंने उनको दाखिले सिलसिला भी कर दिया, पैदा हुए दाखिले सिलसिला कर दिया. और ये मारेहरा शरीफ, ये बरकाती खानवादा, this silsila was known that they never used to make murid. वो मुरीद नहीं बनाते थे. आज के ज़माने पीर साहब के पास जाओ, मुरीद बनना है, आ जाओ, हाथ दे दो, मुरीद बन गए. In that time, वो आते, उनको देखा जाता, उनको जांचा जाता. They used to look at him, observe the person. They used to train the person and then say, now you are worthy of becoming a murid. Then they used to make him a murid. After that, he would have to become an alim, fazil, mufti, learn sharia. After learning sharia, then he would be sent to learn tariqah. After many years of learning tariqah, then if he asked for khilafat, then he would be given khilafat. And he is Mufti Azam Hind. He is just born. Sheikhul Mashayikh says, I have already entered him into the silsila. And as soon as I come to Marehra Sharif, I will also give that trust that I hold of his, which is given to him by Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. यानी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उनके लिए मुकर्रर कर रखा है, वो अमानत मेरे पास है, रूहानी अमानत. मैं बरेली पहुंचूंगा तो वो भी उनको दे दूंगा. ये इमामा है मेरा, ये मेरा जुब्बा है, ये लेके जाओ और ये मुफ्ती आज़म हिंद को दे देना. यानी मुस्तफा रज़ा उस बच्चे को दे देना. 6 महीने बाद, after 6 months, हुजूर शेखुल मशाइख बरेली शरीफ तशरीफ लाए. वहां आपने 6 महीने के बच्चे को, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को, उस वक्त खिलाफत भी दे दी. आप सोचे,
Ala Hazrat radiyallahu ta'ala, at the age of about 20, somewhere around 20, जब आला हजरत बरेली शरीफ से मारहरा शरीफ आए, the first time Ala Hazrat came to मारहरा शरीफ और वहाँ मुरीद हुए, when Ala Hazrat became murid at that age, after becoming an alim and a fazil and a mufti, Ala Hazrat wrote his first fatwa at the age of 13. आप 20 साल की उम्र तकरीबन वहाँ गए मारहरा शरीफ, आपको वहाँ मुरीद बने आप, immediately became a murid. Immediately he was given खिलाफत, आपको खिलाफत फौरन दे दी, ठीक है, मुफ्ती भी थे, आलिम फाजिल भी थे, सब कुछ थे, फिर भी लोगों ने एतराज किया कि हुजूर, how can you give him a खिलाफत immediately? We have come here, we have become muftis and ulama, yet we have struggled so much, yet still we are not capable of receiving khilafah, and you have given him khilafat already. उस वक्त फरमाया था कि क़यामत के दिन जब मुझसे अल्लाह पूछेगा कि क्या लाया है, तो मैं अहमद रजा को पेश करूंगा कि मैं ये लाया हूँ, है ना? तो तब उस वक्त एतराज था, तो आप सोचे ये क्या हाल है कि 6 महीने के बच्चे को खिलाफत भी दी जा रही। तो मुफ्ती आज़म हिंद was such a great scholar. आप सोचे, at the age of 18 he wrote his first fatwa. Huzur Malikul Ulama was already a mufti, he used to write fatwa in Darul Ifta. Mufti Azam Hind once came and he saw that Malikul Ulama had the Fatawa of Ala Hazrat, and he opened them and he was copying some work from Fatawa Razviya. Mufti Azam Hind radiallahu ta'ala came at such a young age, 18 साल की उम्र में, भाई कहा क्या कर रहे हैं? तो क्या फतवा लिख रहा? तो क्या अच्छा देख के फतवा लिखते हैं आप? किताब में देख करके फतवा लिखते हैं? And this is Malikul Ulama Allama Zafaruddin Bihari radiallahu ta'ala, one of the special students of Ala Hazrat radiallahu ta'ala. He is trained, he's been writing fatwa for years, and Mufti Azam Hind has not written any fatwa yet. He's just come into the Darul Ifta and he says, oh, so you look in books before you write fatwa? So Malikul Ulama farmaya, okay, why? Do you write fatwa without looking in the books? So Mufti Azam Hind said, yes, of course. So उन्होंने कहा कि लो लिख दो. He said, here, write the fatwa then. Mufti Azam Hind said, give me the pen. Give me the pen. He took the paper. He wrote the fatwa. And it was a fatwa on fostering, where a child drinks the milk of another woman other than his mother, so she becomes a foster mother. And Mufti Azam Hind wrote the fatwa. And in that fatwa, from his intellect, from his memory, he wrote the references of the books of fiqh without looking in them. And then after he wrote that fatwa, when Malikul Ulama saw the fatwa, he was astonished that how did I not know all of this? He said this fatwa should be taken to Ala Hazrat. Ala Hazrat radiyallahu ta'ala is given the fatwa. He reads the fatwa without increasing even one word, even one letter, without decreasing even one word or letter. Ala Hazrat radiyallahu ta'ala said, Sahal Jawab bi'awnil Malik al-Wahhab. The answer is correct, and this is the help of the Wahhab Allah subhanahu wa ta'ala. You understand? And then Ala Hazrat radiallahu ta'ala became so pleased that my son has written such a fatwa that I have not needed to edit in any way. He gave him a gift of 5 rupees. And in that time, 5 rupees is like 50,000 rupees of today. He gave him that gift. And then he said that I will have your stamp made as a mufti. They used to stamp the fatwa. Ala Hazrat radiallahu ta'ala had a stamp made. On the stamp, it says, Alur Rahman, Muhyiddin Jilani, Muhammad, Urf, Mustafa Raza. And that is the stamp that even today in some books shows the stamp of Mufti Azam Hind radiallahu ta'ala. This was Huzur Mufti Azam Hind at that age. Later on, we all have heard that Ala Hazrat went to Haramain Sharifain and he wrote Ad-Dawlatul Makkiyah bil Maddatil Ghaibiyah. आपको मालूम है, उलमाए हरमैन के पास जवाब नहीं था कि इस अकीदे के बारे में हम क्या लिखें. बड़े बड़े उलमा, great scholars of Haramain Sharifain, they didn't know what the hukum is regarding this matter. When Ala Hazrat came, some of the ulama asked Ala Hazrat, what do you have to say in this matter? So Ala Hazrat radiallahu ta'ala gave them an answer. He gave a speech for 2 hours. They were shocked, ki itna ilm, so much knowledge. They said to Ala Hazrat that you must write the answer. Ala Hazrat wrote for 6 hours. Then he wrote for another 2 hours and produced the book Ad-Dawlatul
ad-dawlatul makkiyya bil maddatil ghaybiyya, and he wrote this book in 8 hours from his memory. From his memory. किताबें घर पे सब बरेली शरीफ में, यहाँ आपने अपने जहन से पूरी किताब लिख दी। ऐसे दलाइल उसमें लिखे कि हरमैन शरीफैन के उलमा उन्होंने कहा कि इस जमाने में अइम्मा बहुत है, बहुत इमाम वक्त है, लेकिन हुआ इमामुल अइम्मा, हुआ इमामुल लिसाइरिल उम्मा, कि ये आदमी जो है ये तमाम अइम्मा किराम के इमाम है और ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के इमाम है। यानी कौन कह रहा है? हरमैन शरीफैन के उलमा। और वो हज का मौसम था, दिस इज द टाइम ऑफ हज। उलमा फ्रॉम टर्की, मोरक्को, मिस्र, शाम, फिलिस्तीन, all the ulama are present in Makkah Mukarrama, and they are saying that this man, जब उनसे पूछा गया ये किताब लिखने वाले के बारे में क्या कहते हो, what do you say about the person who has written this answer? So they said कि हुआ मुजद्दिदु हादिहिल उम्मा, he is the मुजद्दिद of this उम्मा। यानी हिंदुस्तानियों ने तो बाद में कहा कि ये मुजद्दिद वक्त है, दुनिया के उलमा ने कहा कि ये मुजद्दिद वक्त है, उलमाए हरमैन ने कहा। उसके बाद फिक़्ह का मसला आया, there's a मसला on फिक़्ह कि जो नोट है ना, नोट ज़कात दी जाती है सोने पे, चांदी पे, ये जो नोट है ये तो कागज़ है, कागज़ पे ज़कात देनी होगी कि नहीं? उलमाए हरमैन के पास कोई जवाब नहीं था, they had no answer। दुनिया भर से उलमा आए थे, उनसे पूछा गया क्या राय है, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं लेकिन कोई दलील नहीं। Nobody has a definite answer whether zakat has to be given on this paper or not. So Ala Hazrat radiyallahu anhu was there. They came to Ala Hazrat and said, "Ke Huzur, this masala we don't know the answer. Why don't you write the answer to this?" Ala Hazrat picked up the pen and he wrote a whole book named Kiflul Faqih al-Fahim fi ahkam qirtas ad-darahim। पूरी किताब लिखी अरबी में, और उलमा ने जब उसको पढ़ा तो लोगों ने बैक वक्त मान लिया कि इस जमाने में इमाम अहमद रजा से बड़ा कोई आलिम नहीं, इमाम अहमद रजा से बड़ा कोई मुफ्ती नहीं, इमाम अहमद रजा सिर्फ हिंदुस्तान के मुजद्दिद नहीं, आला हजरत मुजद्दिद आजम है, पूरी दुनिया के मुजद्दिद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाल ये हुआ, the matter became, I'm going to finish now, the matter became that all over the world people started sending questions to Bareilly Sharif। फतावा रज़विया में अब देखें सवाल कहाँ से आ रहे हैं, where are the questions coming from? मदीना शरीफ से सवाल बरेली में आ रहा है, मुल्क अफ्रीका से सवाल बरेली में आ रहा है, मुल्क शाम से सवाल बरेली में आ रहा है। मतलब ये है कि बरेली मरकज़े शरीयत हो गया था, मरकज़े दीन बरेली शरीफ बन चुका था। आला हजरत की वफात हुई, मुफ्ती आज़म हिंद का दौर आया। मुफ्ती आज़म हिंद अपने ज़माने में 1945 में आप तशरीफ ले गए मदीना मुनव्वरा, वहां आप गए, उलमाए किराम परेशान थे। The ulama were in a difficulty that Abu Saud, the ruler, has placed a tax on the Hujjaj। उम्रा करने वाले, हज करने वालों पे टैक्स उन्हें लागू कर दिया है। उलमा जवाब नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई जवाब लिखेगा तो वो उसको जेल में रखवा देगा, सर कटवा देगा, उसकी खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकता। Nobody can oppose him, nobody can write to refute that it is haram to place a tax on the people who have come to do Hajj and Umrah। When Mufti Azam Hind came, तो उलमा मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में हाजिर हुए। अरबी में आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं कि हुजूर आप मरकज बरेली शरीफ से आए, आला हजरत के जमाने में भी हम उनकी बारगाह में रुजू करते थे, आपका जमाना है, आज भी हम आपकी बारगाह में रुजू करते हैं, आप इस मसले को हल फरमाए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद picked up the pen, he picked up the paper, he wrote a fatwa। सिर्फ फतवा नहीं, पूरी किताब लिखी, अल क़नाबिलु दुर्रिया अलल औसान नजदिया। आपने पूरी किताब लिखी, अबू सऊद के खिलाफ लिखा, और आपने ये साबित कर दिया कि ये नाजायज है, ये जुल्म है, ये टैक्स हराम है, और जो ये करता है वो फसाद अकीदा है उसमें। लिखने के बाद उलमा when they read this book, तो मुफ्ती शरीफुल हक शारी बुखारी वो फरमाते हैं कि बइत्तिहाद
the ulama of Haramain Sharifain and the ulama of the world who were present there at that time, they all said that in hada illa ilham, this is not but ilham from Allah subhanahu wa ta'ala. wa huwa shaykhul Hindi wal Arab. He is not just Mufti Azam Hind, he is Mufti Azam Hind and Mufti Azam Arab. इसीलिए उनको मुफ्ती आज़म हिंद सिर्फ नहीं कहा जाता, मुफ्ती आज़म आलम भी कहा जाता है। और आखिरी बात पे मैं ख़त्म करूं कि 1975 में आपको मैं बताऊं कि मैंने खानकाहें बहुत देखी, मैंने दारुल इफ्ता बहुत देखे, मैंने मदारिस बहुत देखे, लेकिन ये एक वाहिद दारुल इफ्ता है बरेली शरीफ का, ये एक वाहिद खानकाह मैंने देखी कि जहां से फतवा निकल गया वो कभी वापस नहीं होता। बड़ी बड़ी खानकाहों ने फतवे लिखे फिर रुजू किए, मगर ये मुफ्ती आज़म हिंद, the Darul Ifta of Mufti Azam Hind, once a fatwa has been given, it is never taken back. हुकूमतें बदल जाती है मगर मुफ्ती आज़म हिंद का फतवा नहीं बदलता। 1975 में इंदिरा गांधी ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया। शी डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में फसाद मच रहा है, नसबंदी, to make a man incapable of having children, castration, the rule of castration has been placed on all the men in India by Indira Gandhi, and she has declared a state of emergency. देवबंद से मुफ्ती कारी तैयब ने फतवा जवाज दे दिया कि इट्स परमिसेबल, नसबंदी जायज है। हुकूमत के खौफ से, इंदिरा गांधी के खौफ से, in the fear of Indira Gandhi, because she was ruthless. Indira Gandhi was ruthless. वो तो ऐसी औरत थी कि जिसे चाहती थी सजा देती थी, एक्शन लेती थी, कितनों को जेल में डलवा दिया। नसबंदी पकड़ पकड़ के गांव में जा जाकर they used to capture even young men who had not even been married, and they used to put them into the truck, take them to their centers and have them castrated. नसबंदी कराई जाती थी। जुल्म का ऐसा वबाल छाया था कि उस वक्त लोगों ने फतवे दिए कि ये जायज है, जायज है। खानकाहों ने नाजायज का फतवा दिया। They said it's not allowed, it's haram. जब इंदिरा गांधी का जुल्म उन पे ढाया, वो फतवा उन्होंने वापस ले लिया कि we have rectified our fatwa, it is permissible, we were mistaken. बरेली शरीफ इस्तिफ्ता पहुंचा मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में 1975 में। मुफ्ती आज़म हिंद ने मुख्तसरन लिख दिया कि नसबंदी हराम है, जिसको अल्लाह ने हराम किया, रसूल अकरम ने हराम किया, कुरान की आयतों से आपने